ठीक है. So welcome back once again, guys. इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट क्वालिफायर्स में जो भी हॉट टॉपिक्स अपडेट्स जो भी चल रही हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद वेस्ट इंडीज. Yeah, let's start off with West Indies. A big disappointment for me. A big disappointment for West Indies cricket board. If I don't bring the West Indies cricket board, I would bring the fan base that West Indies holds. Yeah. And more so guys like Darren Sammy, who came in with good spirit. I think he tried his absolute best. Round of applause to him. And then this one commentator who is my absolute favorite, Ian Bishop. Seeing him in the commentary box, he was alongside Carlos Brathwaite. I think it was a huge disappointment, but it's like a part of the game. जब भी मानी भाई से बात करता हूँ, मानी भाई कहते हैं it's a part of the game, bro. Part of the game तो है यार, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज डिड नॉट शो दैट दे वांटेड इट वेरी हार्ड. कि कभी कभी दो टीमें अगर इक्वली भी खेल रही होती है ना, तो जीतता वो है जो the one who wants it more. तो वेस्ट इंडीज की तरफ से डैरेन सैमी ने भी बोला कि एटीट्यूड सही नहीं थे, कैजुअल अप्रोच, और वही उनके जो वो ईगो शायद हर्ट हो गया ना उनका कि how can we be in the qualifiers. लेकिन फिर it goes down to show it yourself. Exactly ना, exactly. जैसे आपने वर्ल्ड कप में दिखाया था और आप लोग जीत गए थे 2011 2015 तक, नहीं 15 नहीं था. एनीवेज जो भी था, बट देयर वाज अ वर्ल्ड कप जिसमें उनकी फीमेल टीम भी जीत गई थी, उनकी मेल टीम भी जीत गई थी, और उस वक्त वो उनका बोर्ड कनंड्रम्स में था बिल्कुल. लाइक but we're missing a lot of guys, man. I feel like West Indies missed a lot of good batsmen, right? I can bring up 10 guys here, but Evan Lewis will be one of them. True. Right? Carlos Brathwaite, why was he sitting outside? Why is he not a part of the team? Darren Sammy could have spoke to Carlos Brathwaite and said, you know what, come on down, because obviously Carlos Brathwaite, remember the name, right? Maybe it's not? Like a one day versus ODI, I think. Sorry, one day versus T20 thing. Because Brathwaite is a T20 specialist. But still, man. Nowadays people adjust so nicely. I mean, not people, but players adjust so nicely to conditions. And someone like Carlos Brathwaite, obviously, like I said, we can take a lot of names, but I think Carlos Brathwaite is an outstanding player. He's got a lot of potential, but like I said, he's like I said in the last vlog that जहाँ पे पैसे आते हैं वहाँ पे वेस्ट इंडीज प्लेयर्स आते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करते हैं. बिल्कुल, बात फिर एंड में पैसे और एटीट्यूड की आ जाती है ना. थोड़ी नोबल कैरेक्टर्स मिसिंग हैं जो कि पैसे को साइड में छोड़ के नेशनल ड्यूटी को जो है वो प्रायोरिटाइज करें. लेकिन बस आई थिंक अब वेस्ट इंडीज का चैप्टर खत्म हो गया तो हो गया भाई. ठीक है, नेक्स्ट टाइम गुड लक. आप लोगों ने नहीं अच्छा खेला, ये UAE, US, स्कॉटलैंड, इनमें आप हार गए. इनमें you were the best team. Time to reassess, time to sit down. The board needs to sit down. Or obviously selectors need to sit down. Obviously it's not the end of the world. India is touring West Indies soon. तो आप अपने होम पे खेलें, आप दिखाएं कि आप इंडिया जैसी वर्ल्ड बीटिंग साइड को आप जो है किस तरह टैकल कर सकते हैं. और अब तो इज्जत का सवाल है बेसिकली. That's a good word, ठीक है ना. हाँ, अब इज्जत का सवाल है. जीत तो नहीं पाएंगे पर टैकल कर सकते हैं यार. कुछ नहीं पता ना. नहीं, ये तेरा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन my opinion. कुछ पता नहीं है भाई, कुछ पता नहीं है. There was that famous game that happened a couple of years ago in one day internationals, England versus West Indies. Bro, there was some maximums. There were some huge maxims. I think it went up to like 370 runs or something. True. But I agree. Obviously, I'm also leaning with India to win the series. But there's going to be youngsters too, right? I don't think West Indies is going to probably bring in too many youngsters, which I personally feel they should. There's a lot of potential. CPL से कोई तो लेके आओ. हाँ यार, इतनी बड़ी CPL आप करा रहे हो. इतना बड़ा आपने लीग बनाया है, कोई तो लेके आओ CPL से. वेस्ट इंडीज ये अब वैसे बहुत लंबा हो जाएगा, बट लास्ट पॉइंट ऑन वेस्ट इंडीज, देन वी आर कमिंग टू स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे. अमेजिंग गेम yesterday और today happened. तो लास्ट पॉइंट में यही बोलने वाला था कि वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली हम सबको पता है, इट्स अ बंच ऑफ आइलैंड और वेस्ट लाइक अ नेशन मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ सेपरेट नेशंस. ट्रिनिडाड और जमैका हो गया आपका. और कौन सी हैं? सेंट किट्स है, सेंट लूशिया तो सिटी का नाम है. Okay. But anyways, कोई बात नहीं. The point is, कोई नहीं. The point is कि वो उसकी वजह से पॉलिटिक्स भी तो होती होगी ना. Definitely. कि भाई जमैका का बंदा से हो, तुम वहां से हो, इधर का बंदा चाहिए, उधर का बंदा चाहिए, हेड कौन है, वो अपने बंदे ला रहा है. That's getting off topic and getting political, and I don't like to get political here.
नहीं, you don't like it, it's fine. Yeah. But we all know No, for India, sure, 100%. Pakistan, Mhm. West Indies, Sri Lanka, Afghanistan. These are some teams Giants. जिसमें पॉलिटिक्स हमेशा इन्वॉल्व होती है. Mhm. ठीक है ना, इंडिया से लेके अफगानिस्तान तक हमेशा. मे बी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में नहीं होती होगी, साउथ अफ्रीका में. वो सिर्फ उन दोनों के बीच में ही होता है. हाँ, लेकिन Right. पॉलिटिक्स, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो ये तो एक अलग टॉपिक है, बट Mhm. इंडिया पाकिस्तान का बोर्ड तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना. Yeah. तो पॉलिटिक्स को इग्नोर करने का कोई वो ही नहीं है. There's no way. There's no way. There's no way. There's no way, Anyways, for sure. अब हम आ जाते हैं स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के ऊपर. Mhm. तो कर्स की बात कर रहे थे आप. कर्स की बात ये कर रहा था मैं मानी भाई को. सॉरी, हाँ. थोड़ा सा ये निकाला है मैंने नोट्स. चलो यहाँ से करते हैं. कर्स की हम ये बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम मैंने बोला था हमने इतना प्रेज किया जिम्बाब्वे को लेके. बिल्कुल. And, सिकंदर रजा and everything. Sikandar Raza, Ryan Burl, there's Masa Khadza, Mazhar Rabbani. Yeah, Mazhar Rabbani, guys Yeah. like that. उतने सारे नेम तो हमने नहीं लिया था, but I guess उस टाइम पे नहीं आया था. अच्छे players, great players. Man, we talked about the strength, we talked about the guys that are the main foundation of the playing 11, and they gave up. Win, lose, done. या मतलब लास्ट से जो मुनीर ने एक बात नोटिस की थी कि लास्ट टाइम व्हेन वी रिकॉर्डेड उससे पहले वो बिल्कुल एक इंक्लाइन पे चल रहे थे. राइजिंग उनका जो ग्राफ है वो फुल ऊपर जा रहा था, मेनली बिकॉज ऑफ सिकंदर राजा एंड स्टफ. लेकिन उसके बाद दे लॉस्ट 2 गेम्स. स्कॉटलैंड वाला जो गेम था जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, इफ दे वन वो क्वालिफाई कर जाते हैं ना. Yeah, they would have qualified. लेकिन अभी तक नहीं क्वालिफाई किया उन्होंने, क्योंकि स्कॉटलैंड ब्रॉट देयर एब्सोल्यूट ए गेम. स्कॉटलैंड ने, अगर चलो हम शुरू से बात करते हैं, स्कॉटलैंड बैटेड फर्स्ट. दे वर 100 for 1 इन बाय द 25th ओवर. आई थिंक 100 रन बन चुके थे और सिर्फ एक आउट थी. स्कॉटलैंड का भी कोलैप्स हुआ. ठीक है ना. दे एंडेड एट 234 और 8 आउट उनके हो गए थे. तो 134 रन के अंदर उन्होंने 8 विकेट्स अपनी लूज की. उसके बाद आई जो है स्कॉटलैंड की बारी, स्कॉटलैंड की बॉलिंग की बारी. तो भाई हमने देखा कि स्कॉटलैंड का मेन जो पेसर था, एक्सप्रेस पेस वाला सोल जिसका बंदे का नाम है, कहाँ से आ गया ये बंदा? एकदम से लेके आया ना इसको. खेलता होगा किसी क्लब में. हाँ, कोई क्लब से तो खेलता होगा. We're not sure of him, but ब्यूटीफुल पेस, अनप्लेएबल था जिम्बाब्वे के बैट्समैन के लिए. 149 150 मार रहा था वो आराम से. 150 शायद टच नहीं किया उसने, लेकिन 149 पॉइंट समथिंग टच मारा है उसने. bring it close to 150. Yeah, 149 प्लस तो फिर 150 हो गया ना. Yeah, that's it. You're an express fast paced bowler. बेहतरीन ब्यूटीफुल बॉलिंग कर रहा था वो. मजा आया उसको देख के. और स्कॉटलैंड दिख रहा था कि वही अगेन गोइंग बैक टू हु वांट्स इट मोर, स्कॉटलैंड दिख रहा था कि भाई स्कॉटलैंड जो है वो बेसिकली चाह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह ये 2 पॉइंट हासिल करें और आगे बढ़े. तो I think Zimbabwe probably underestimated Scotland, bringing back to their ICC rankings. They're number 12 in the ICC rankings, so you can't take them away from the game. You cannot, cricket mein you can never cross out any team, because in any day they can bring their best A game and they can just bowl you out. A good example would be the Zimbabwe one. No, Zimbabwe versus Sri Lanka. They were bowled out under 170 in a one-day international match. So, kuch bhi ho sakta hai. And Sri Lanka won by 9 wickets. Yeah. And then if you want to talk about Scotland, I have some notes here. In the last, they have 3 appearances in the last one-day international World Cups. 1999, 2007, 2015, and their last, their first win in one of the World Cup events was when they beat Hong Kong. Hong Kong is okay. I don't think it's too bad. अभी मुझे याद आ रहा है इंडिया और हांगकांग का मैच हुआ था. उसमें हांगकांग ने थोड़ा टफ टाइम दे दिया था इंडिया को. बिल्कुल टफ टाइम दिया था. And then I think हांगकांग का, we might go off topic here, but हांगकांग का कोई एक खिलाड़ी था that quit the game. Sorry, that quit with Hong Kong. Yeah, the team, and he said कि मैं इंडिया जाऊंगा और I'm gonna get the Indian nationality and I'm gonna go ahead and practice there and get and hopefully get a chance to. Good luck to him. नहीं हुआ. Obviously long time भाई 5-6 साल की बात हो रही है. कहाँ है उसका नाम? इंडिया में ऐसी स्पेस ही नहीं है कि बाहर से प्लेयर आए. उनका बैकअप ही इतना बड़ा है. Anyways, तू क्या शेयर कर रहा है? So ICC 12, this was as of 16th April 2020. Still going on because obviously we just hit July. And then if you want to talk about guys in their 11, you have
You have Richie Barrington, which is their captain. Yeah. I've seen this guy play in the last year T20 World Cup, and he was amazing. Like everyone was going Richie Barrington. But then if you Yeah. want to talk about his one-day international stats, 106 matches, 2,673 runs, average touching 29.96, so that's almost average of 30. Not bad. 300s and 16 50s, highest of 140. Impressive. Highest score of 115, right? तो इसमें अगर हम इन स्टैट्स को थोड़ा एनालाइज करें तो हमें यही दिखता है कि स्कॉटलैंड अब मुझे स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर चुका है ना अब? Not yet. Okay, not yet. The But only if team that's qualified is Sri Lanka. okay, but if Scotland qualifies, which I feel like they will, मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड का जो पेस अटैक है वो बड़ी बड़ी टीमों को जो है ना हार्ड टाइम दे सकता है क्योंकि विकेटें एग्जैक्टली विकेटें गिरती हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। आज भी हम देख रहे थे 35 पे 4 या 5 आउट हो गए थे जिम्बाब्वे के। उसके बाद सिकंदर रजा और रायन बर्ल्ड की पार्टनरशिप लगी थोड़ी, बट एंड में इट डिड कम क्लोज। 30 रन से स्कॉटलैंड जीती है सिर्फ, लेकिन 234 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डिफेंड करना एक इम्प्रेसिव फीट है। I think Ryan Brill started off really slow. I think pressure बहुत था, and by the time he said, "Okay, I'm gonna go at it," I think it was just slightly late. Or a late. Obviously, I think they lost by maybe right under 35 runs, which could have been possible. But the opening partners collapsed, and then, like you said, that all the credit goes to Chris Soul on 49, and he was just bowling and crazy. He just distracted absolutely them beautiful, out of nowhere. absolutely beautiful. And it's always great to see these like smaller teams. By smaller, I mean like lesser known teams. Come up in the international stage और वो अपनी नेशन की प्राइड दिखाते हैं कि भाई हमें चाहिए ये टूर्नामेंट, हम जाना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में। हार्ड ब्रेक फॉर जिम्बाब्वे क्योंकि उनके होम में हो रहा है ये जो टूर्नामेंट है। तो जब स्कॉटलैंड जीती थी पूरा स्टेडियम बिल्कुल खामोश हो गया था। Yeah, of course. Because they had such a great start, right? I think it was 5 games they played. Yeah, बिल्कुल बहुत अच्छा start. And they were on the top, right? Other than Sri Lanka, they were on the top, and then to just come out of nowhere, lose 2 crucial games. Like, where's your mindset? What happened in the dressing room? But I want to see them in the World Cup. मुझे अभी भी स्कॉटलैंड से ज़्यादा I want to see Zimbabwe, क्योंकि सिकंदर रजा की वजह से, ठीक है ना, प्लस फाइटिंग टीम है यार, हमेशा फाइट करते हैं वो। उनके घर में क्वालिफायर हुआ है, अगर वो नहीं आए वो भी एक सैड सिचुएशन हो जाएगी। तो लेकिन अभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि दे वर डूइंग सो गुड इन द स्टार्ट बिकॉज दे नो द कंडीशंस, और बाय द टाइम द अदर टीम्स acclimatized to their conditions, this sort of got left behind. Because obviously the more you play, the better you assess the pitches, the more you assess the grounds, कहाँ पे शॉट्स मारने, कहाँ पे फील्ड बहुत तेज है,